अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खिचड़ी। खिचड़ी क्या है? खिचड़ी पॉडकास्ट की दुनिया में एक हमारी छोटी सी एफर्ट है जहाँ पर प्राइमरीली वी टॉक अबाउट क्रिएटिविटी, लर्निंग एंड एजुकेशन। तो आज हमारे पॉडकास्ट में देयर इज़ अ वेरी स्पेशल इमरान खान। ये वो इमरान खान नहीं है जो आप समझ रहे होंगे। इमरान इज़ फाउंडर ऑफ रैपिड कंप्यूट और क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में बहुत से बड़े-बड़े काम करने के बाद he jumped to basically the gaming world, and Imran is the editor-in-chief for IGN Pakistan. और उसके अलावा he is also the founder of Raptr Gaming. तो Raptr जो है वो क्या है, इमरान क्या कर रहे हैं, क्या कोई नया कुछ इंकारी कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उसके बारे में बात करेंगे। बट पहले क्विकली आई वांट टू वेलकम यू इमरान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज की पॉडकास्ट का एक्चुअली जो टॉपिक है वो टॉपिक शुरू हुआ था इस पॉडकास्ट के भी शुरू होने से पहले। अ, हम आई थिंक कुछ 6 महीने पहले मिले थे, 6-7 महीने पहले मिले, और हमने कुछ वी स्टार्टेड गीकिंग आउट अबाउट स्ट्रीमिंग, गेमिंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। एंड वहाँ से वी टॉक्ड अबाउट एन एक्सपीरियंस दैट आई शेयर्ड अ ईयर बैक, अ कपल ऑफ ईयर्स बैक ऑन लिंक्डइन, जो था बॉला रह गया 4 से रन रह गए 9। And that was primarily about the local ecosystem, the opportunities that exist both in sports and e-sports system और content को stream करने में। तो आज उसी के बारे में हम कुछ conversation करेंगे। तो इमरान, पहले तो मुझे बताइए कि रैप्टर क्या है? Yeah, Raptor, first of all, तो एक is another labor of love for me. This is now my third startup in like about 13 years. So first of all, it's a passion and it's the new thing that drives me. And also the new thing that drives me to make change in the country. Because आपने मेरे क्लाउड की जिंदगी की जिक्र किया, तो वो भी 2010 में जब मैंने शुरू किया तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, बल्कि मेरी ओपनिंग सेरेमनी जो थी प्रोडक्ट की वो इस्लामाबाद में थी। एंड पीपल वर डोनेटेड, मैं कहा यार आप लोग जीमेल से नहीं हटते, कॉर्पोरेट ईमेल पे आप हमको क्लाउड बेचेंगे। बट वी वांट टू मेक अ चेंज, वी सेड यार somebody has to start somewhere. 10-12 साल करने के बाद gaming has always been a passion of mine. Always been a passion of mine since I was a kid. I've always participated in the ecosystem, always been fascinated by the tech behind it. So last year, earlier on, we decided to go ahead with something called Raptr Games. और Raptr Games की बुनियादी जो मिशन था वो ये था कि we need to start providing solutions to the underserved portions of the gaming ecosystem. और उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी। तो फॉर एग्जाम्पल वन पार्ट वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गेमिंग इकोसिस्टम के लोगों को पता ही नहीं है कौन से स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, कितना अच्छा खेलते हैं, कितने ज़्यादा टूर्नामेंट जीते हैं ग्लोबली, और कितने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और ग्लोबली कितने रिस्पेक्टेड हैं, औरतें कितनी हैं, वो कितनी फेमस हैं। दैट वाज वन पार्ट। सेकंड पार्ट उस कम्युनिटी बिल्डिंग के, अगर हम कम्युनिटी को मशहूर करेंगे तो देन ब्रांड विल बी इंटरेस्टेड, स्पॉन्सर विल बी इंटरेस्टेड, इन बच्चों को एक लाइवलीहुड मिलेगा, इनके पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस मिलेगी। बिकॉज जो बड़ी बड़ी स्टोरीज है वो तो एक दो ही होती हैं। तो वहां से पहले रैप्टर स्टार्ट हुआ फ्रॉम द कम्युनिटी एंगल। एंड हमने कहा सबसे पहले, क्योंकि हमें रिसर्च भी करनी थी, हम पहले ये एंगल सॉल्व करते हैं। तो वी टुक अ बिग लीप ऑफ फेथ एंड वी वेंट एंड वी स्पोक एज टू वेरी यंग अपस्टार्ट्स। वी वेंट एंड वी वेंट टू स्पीक टू द गाइज एट आईजीएन ग्लोबल एंड वी सेड यार हमें ये काम करना है। उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं, कितने लोग हैं आपके पास? मैं कहा आपके सामने बैठे हैं 2 लोग, ठीक है। They're like, buddy, the smallest operation we have is like 35 people minimum in the editorial be. He's like, आप कैसे करोगे? So they're like, चलो ठीक है, we'll put you in front of our team and they can decide. And this was a gentleman, Adam Dory, and really love it, respect him, he's the global VP of IGN. तो हमें पहले का मौका मिला, हम 2 लोग थे और बस हमने उनको कोई छपील बांध दिया, हमने अपनी geekiness basically दिखाई। और IGN तो बहुत लोगों को पता नहीं है, IGN 2016 में पाकिस्तान आ चुका है। And they left with a very sour taste in their mouths because हुआ था पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग किसी को आती नहीं है, अखबार से अलावा। स्टोरी ऑफ माय लाइफ। तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग किसी को आती नहीं है, राइट? एंड यू फील दैट way more than anybody else. तो उन्होंने कहा यार चले देखते हैं कौन है। एंड देन वी कन्विंस्ड देम एंड दे सेड गिव अस अ वीक टू लेट यू नो। एंड मच टू आवर सरप्राइज दे सेड यार वी आर गोइंग टू गिव यू द कंट्री ऑफिस। एडिटर इन चीफ कौन होगा? मैं कहा मैं हूँ। ठीक है, दे सेड फेयर इनफ, वी वेरी हैप्पी। अब अगला मसला था, उन्होंने कहा जी रॉयल्टी, पैसे ऐसे तो है ही, हमने तो अभी तक सिर्फ ऐसी सीट में मैंने अपनी खोली है, हमने पैसे भी रेज नहीं किए।
उन्होंने कहा चलो ये भी शो ऑफ फेथ करते हैं आपको, कुछ गाइस आर पैशनेट, काम चलाओ, पैसे आके ना दे। सो दैट वाज आवर फर्स्ट मोटिवेशन, यार अपने मुल्क में कुछ करना है, एंड वी डिड। वी वेंट बिग एंड ओवर द लास्ट ईयर, अगर कोई pk.ign पे जाता है या हमारे सोशल मीडिया पे जाता है, so we've come a really long way that a lot of larger countries, I mean, we produce 2 weekly shows every week. हम junior developers से लेके कितने लोग को हमने कवर किया है, जो लास्ट वीक वी कवर्ड अ चाइल्ड फ्रॉम कराची जो कि बाहर तक बड़ा रहा नॉटी डॉग स्टूडियोज में, लास्ट ऑफ अस पे Wow. ये आईपी पे काम किया था। मोहम्मद बिन ताहिर is covered on our feature last week. So we started making that real impact over there, and that's what we started with. But our goal was always to create uh, an ecosystem around gaming and just do local livelihood, etc. क्योंकि हमने दुनिया बहुत ट्रैवल, वी वन ऑफ द फॉर्चुनेट वंस, मी एंड यू ट्रैवल द वर्ल्ड, एंड वी सीन डेवलपिंग इकोनॉमी में ये प्रॉपर लाइवलीहुड है यार। लोग ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, लोग गेमिंग करते हैं, एंड दे मेक मनी ऑफ इट एंड स्टफ लाइक दैट। सो देन वी सेड यार इस पे अब जरा काम। सो देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि जो इतने सारे हमारे स्ट्रीमर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स कहता हूँ, चले लेट्स कॉल देम, दैट्स अ बेटर वर्ड। सही। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वीडियो गेम्स और गेमिंग की दुनिया के, चाहे वो गेम स्ट्रीमर्स हो, चाहे वो पॉडकास्ट ब्लॉगर्स, वीलॉग क्रिएटर्स हो, या वो लोग जो ट्रेनिंग करवाते हैं गेमिंग की, यूनिट की, अनरियल, ऑल ऑफ दैट, वो पैसे कैसे भाई हर हफ्ता वीडियो निकालते हैं, 2 लाख बंदा वीडियो देखता है। तो मेरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि वो पैसा नहीं बनाता। ठीक है, इसलिए लॉट ऑफ देम हैव वेरी surprising range of day jobs, from being dentists to having being an accountant to like whatever, but that is not their passion. Their passion is this, but this doesn't earn them anything. फिर देखे हम तो बड़े हुए सुनते हुए ये फान जो टैक्स वगैरह सारे बड़े पैसे बनाते हैं। फिर हमने उनसे बात की, नॉट फान लिटरली बट लाइक, तो पता चला थी कि इन सब ने 4-5 साल अपने लाखों रुपए चलाए, और अभी भी ये बेचारे जो है सिर्फ स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइजिंग से करते हैं। तो बस सर उस वक्त ये हो गया हमारा मिशन, एंड दैट इज व्हाट यू मेड आवर मिशन। वी सेड इनफ, वी विल क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल गेमर्स इन पाकिस्तान, all the way down to the bottom of the pyramid, चाहे वो tier 3, tier 4, tier 5 city हो, चाहे वो कराची और इस्लामाबाद हो, where anybody who has talent, anybody who's into esports, anybody who creates content around gaming should be able to turn it into your life, into a livelihood. And that's the very basic definition of an ecosystem. आप जो काम करते हैं, can you make a livelihood out? Absolutely. And I think one of the biggest reason, because जब भी हम देखते हैं ई स्पोर्ट्स की या गेमिंग की हिस्ट्री को, आई रिमेंबर जब भी अभी भी मैं किसी से मिलता हूँ ना, अगर कोई अभी की आजकल के दौर में कोई यंग जो है वो लड़का है लड़की दिया गेमिंग, तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ यार कि इन अर्ली 2000, इन लेट 1990s, उस वक्त भी टूर्नामेंट होते थे, द ई स्पोर्ट्स सीन वाज वेरी बिग, और उस वक्त इनफैक्ट ऐसे भी टूर्नामेंट हुए हैं जो जो केबल टीवी तक पे एयर हुए हैं। सो दे गेट सरप्राइज। तो एक तो बहुत बड़ा रीज़न ऑब्वियसली ये है कि आप उसको मोनेटाइज नहीं, आप उसको लाइवलीहुड नहीं बना सकते, तो एट द एंड एक उम्र के बाद दैट थिंग किक्स इन, यार आप ज़िंदगी में कुछ कमाना भी तो है ना, घर वालों को भी ध्यान करना, तो यू मूव अवे। बट एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि गेम्स के साथ एक स्टिग्मा भी अटैच, तो उस फ्रंट पे जो हम देखते हैं, अच्छा स्टिग्मा भी अटैच है, लेकिन दूसरी तरफ ये हम देखते हैं, you talked about IGN की story and then talking to streamers and content creators. On our end, we basically run exposure programs and trainings and everything for game building. But काम जो भी आप इस इंडस्ट्री में करते हैं, उसका एक्सपीरियंस, उसका जो वो फॉरन एक्सप्लोर हो जाता है। There's so many people interested. तो स्टिग्मा भी है, बट इस स्टिग्मा वाली चीज़ को कैसे रिजॉल्व करें? I always tell people, economics, जब आप किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं ना, तो देयर इज ऑलवेज 2 साइड्स टू एवरी सिचुएशन। जब आप कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें इन्फ्लेशन बहुत है, पैसे नहीं है, लोग के तो खाने पीने के लाले पड़े हुए, लोग इन कामों पे क्यों लगेंगे, यू देयर बिगिन। But there's always a flip side. There is a extremely large, almost to a critical point, critical mass large population that are looking for ways to supplement income. That's exactly how it started in India. When the people I look up to in India, Loco.gg, Nick.gg, that's exactly what they did. They said, they did the exact same research, and nobody in India is like 5 times our size, and they said that यार लोग हैं जो गाँव देहातों में गेम खेलते हैं, स्ट्रीम करना चाहते हैं, स्ट्रीम देखते हैं, ट्विच देखते हैं, मैचेस देखते हैं, एंड इन्फ्लेशन गरीबी इतनी हो गई है कि अगर हम इनके इनके इनकम में महीने के 1500 इंडियन रुपये, हमारा
10,000 भी ऐड कर देना, it's a great value, right? So there were, first of all, there was a flip side. So economics is a big part of how you convince parents and convince the naysayers of society. सही इसमें 2-4 लोगों को क्रेडिट था, बट इसमें अगर आप रिसेंट हिस्ट्री की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है अरसलान अशकुल, आतिफ खान, and Kia. खान है, आतिफ आतिफ भट्ट Atif है, hai, हनी से वो then है, you had the kid अवैस that हनी है. Abbas Honey is right now in Dubai right now. And you look at people who have won tournaments around Dota, $8 million, $2 million the prize pool and stuff like that. And वो उन्होंने start किया, and then when people like Salan and on made it a household name, जी अच्छा, ये पैसा मैंने वो रन, then you had a lot of people look up and say, okay, my son or my daughter or whoever is into the sport, let's at least explore it a little bit. ये monetize हो सकता है कि नहीं हो सकता, right? So then I met a girl who out of Islamabad, comes from a typical Pakistani family, very conservative around these things, and she was very good at Valorant. And she enrolled by herself in a few tournaments in Indonesia and Malaysia, and she did very well. So she got signed to a club. When she got to a league, when she got signed to, that was the first time she experienced something like this. So she went to her parents and said, "कि मुझे team में sign करना चाह रहा है." तो उन्होंने कहा किस चीज़ की team? उन्होंने कहा sports team. उन्होंने कहा कौन सा sport? उन्होंने कहा e-sports. उन्होंने कहा ये क्या? तो उन्होंने कहा ये तो sport is computer पे. तो उसने मैं Valorant खेलती हूँ, ये है वो है फलाना है. And उन्होंने बड़ी resistance दिखाई. तो कहा चले ये मैं आपको commit करती हूँ, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगी. Let me experiment for a year. जो होगा. And करते I won't take a name because she wouldn't like that. वो आज इस रीजन में Valorant की कोच, अच्छा, सिंगापुर की और इंडिया की टीम से कोच, ठीक है. एंड so when you start giving earning opportunities to people, and कोई भी टॉपिक जब तक आप मेन स्ट्रीम में डिस्कस नहीं करोगे ना, उसकी कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं आएगी. अरसलान और बाकी लोगों के बाद क्या हुआ कि हर अखबार, हर टीवी स्टेशन, हर मॉर्निंग शो, एंड आई हैव माय ओन thoughts on morning shows in Pakistan, everybody started showcasing these kids who were doing like really well, and these kids were from like tier 2, tier 3 cities. So it became really important to showcase that, so that you can break the stigma and attach to it कि यार ये भी एक legitimate career है. अच्छा, यहाँ पर लेट्स टेक अ स्टेप बैक. जब भी हम बात करते हैं किसी भी इकोसिस्टम की, तो हम कहते हैं यू नीड वन बिग सक्सेस. अब इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखते हैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को, तो टेकन रियली कैन लाइक प्रोवोक द सीलिंग है इन टर्म्स ऑफ कि मैं देख रहा था टेकन वर्ल्ड टूर, जब लास्ट टूर्नामेंट होता है साल का, उसमें टॉप 20 प्लेयर्स आते हैं बाय इनवाइट, एंड लास्ट ईयर 5 जो थे वो पाकिस्तानी, ठीक है ना, विच इज़ इनसेन. एंड देन थिंग्स लाइक दिस हैपेंड कि नी केम पाकिस्तान, और कभी जर्मन प्लेयर्स आ रहे हैं, कभी कोई प्लेयर्स आ रहे हैं, बिकॉज दे आर रियली क्यूरियस. बिकॉज आमतौर पे होता है ना, कुछ वैसे भी पूरी दुनिया में होता है और पाकिस्तान में खास तौर पे होता है कि हम कहते हैं यार वो अच्छा, ये अरसलान तो तुमने देखा है, लेकिन ये जिनके साथ खेलता है ना वो तुमने नहीं देखा. एंड एक हद तक इट्स ट्रू एज वेल, बिकॉज आप अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल के अच्छे होते हैं. बट व्हेन वो जब पटारी खुली, अब बीच में से आतिफ भट्ट निकला और बिलाल खान निकला और अवैस हनी निकला और इतने सारे प्लेयर निकले. बट अब अगर हम देखें व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स दैट नीड टू हैपन, बट बिफोर वी टॉक अबाउट इट, मेरा सवाल ये होगा कि पॉलिसी लेवल पे हमें किस तरह के चेंजेस चाहिए. हम इन जो लोग एटलीस्ट अभी निकले हैं, इनकी फैसिलिटेशन के लिए क्या बेसिक स्टेप्स करने की ज़रूरत है? देखिए, ये बड़ा वसी सवाल है. मैं आपको वैसे, अगर हम पहले बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या काम. तो आई हैव रिसेंटली बीन आस्क्ड बाय अ लॉट ऑफ दीज ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स एंड स्ट्रीमर्स to use my platform. I don't know, they think I have some influence, and IGN and others, to basically, first of all, तो infrastructure issues के ऊपर गवर्नमेंट से बात, which is basically यार हमारे इंटरनेट की क्वालिटी इतनी गंदी है कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम पीपल, हम बहुत जल्दी फायर हो जाते हैं बिकॉज वी हैव हाई लेटेंसी, हाई पिंग, कंसिस्टेंट सर्विस नहीं है, तो वी गेट किक्ड ऑफ teams and league. And this is a story across Pakistan, Karachi, Lahore, Islamabad, Pindi, whatever you want to call it. सबको ये मसला है, right? So first of all, तो infrastructure level पे there is a serious issue कि अभी तो आप पॉलिसी पे बाद में, लोग घरों पे नहीं खेल, लोग घरों पे ही they cannot become freelance e-sports players and play. जितने मुल्कों में मैंने अभी रिसर्च किया ना, वहाँ पर जितने ISPs हैं,
they work with all of these people and they ensure that they optimize that traffic route so that they're able to get the best connection to like the Apex servers and the Valorant servers and the Dota servers. यहाँ पर ऐसे कुछ मिनिस्ट्री में बाकी मुल्कों में मलेशिया वलेशिया आप चले जाएं वहाँ पर मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री कह रहा हूँ पीटीए टाइप के इदारों में वहाँ लोग हैं जो ये समझते हैं, जो इस इंडस्ट्री का स्केल समझते हैं, जो इसका इम्पैक्ट समझते हैं, उसकी बेहतरी के लिए इवन माल्टा जैसी छोटी सी जगह बिल्कुल सर ऐसा is ही है। heavily पैनामा investing. माल्टा व्हाटएवर ठीक है आप ले लें वो हेवीली मतलब हम तो करीब भी नहीं इस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सोचो तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम होना चाहिए। अब आप पॉलिसी पे जब बात आते हैं ना तो बहुत अच्छा रिसेंट मॉडल उठा लेते हैं। पुराने जो हो गया वो हो गया सऊदी ठीक है। मैं बड़े मल्टीपल रीजन है सऊदी अरेबिया को saying that a culture far more conservative than you, a culture thought to be a lot more religiously book-ended than you. जी इस पे तो कोई बहस नहीं है। This is Right. how we've also grown up, Right. right? And a culture thought to be far less expressive to cultural media than you. And a very small country, 40 million. Well, not by European standard, but by sub-East continental standard, it's a small country. ठीक है। जब सऊदी अरेबिया में 40 मिलियन की आज आबादी है, मैं आपको एक हफ्ता पहले के स्टैट्स बता रहा हूँ। 24 मिलियन गेमर्स ऑनलाइन गेम, तो मतलब 60% से ज्यादा लोग ऑनलाइन गेमिंग प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल करते हैं। 40 में से 24 मिलियन, 24 मिलियन में से 21.5 मिलियन ऑनलाइन गेमिंग पे खर्च और ट्रांजैक्शन, दैट मींस एक्टिव इकोनॉमी। 21.5 मिलियन एक्टिव इकोनॉमी में सिर्फ खेलने तो ये में दो डाल सूरत में पॉसिबल है कि या तो उनके पास इंटरनेशनल सर्वर्स तक रसाई हो क्लियर, या लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इतना अब मैं इन्वेस्ट हो आता गया हूँ हो। इसमें अब हाँ, तो आप जब आप सऊदी ने ये चीज देखी कि यार ये हमारी यूथ और हमारी पॉपुलेशन का एक डिमांड है यूथ, तो पहले तो उन्होंने अपना ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन पे काम किया घरों में 99% ब्रॉडबैंड। उसके बाद ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन के जी ग्लोबल लेवल पे compete कर सके हैं मिडल ईस्ट में इधर उधर, उस पे काम। फिर उन्होंने पॉलिसीज बनाई और इनवाइट किया ई स्पोर्ट्स लीग को, दुनिया भर से ई स्पोर्ट्स टीम को, यार यहाँ पर आके बूट कैंप लगाएं। यार क्रिकेट के लिए भी करते हैं ना यार, हॉकी के लिए भी करते हैं, क्या बूट कैंप लगाएं हमारे एक्सपो सेंटर्स में। आप रिक्रूटिंग करें, आप यहाँ पर करें, हायर करें, कॉन्ट्रैक्ट दें, ताकि एक इंडस्ट्री का फ्रेमवर्क खड़ा हो। और अब आपने पढ़ लिया होगा सर $60 बिलियन का तो उन्होंने बजट रखा हुआ है अब अगले 10 साल में गेमिंग को प्रमोट। तो पॉलिसी लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिकॉग्नाइज इट एज एन इंडस्ट्री। ये एक ऐसा मसला है यासिर जो हमारे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो टीवी फिल्में बनाते हैं वो भी सिर्फ आज से 6-8 साल पहले एक्सेप्ट हुई है एज एन इंडस्ट्री। आपको याद होगा इस इंडस्ट्री की लीगल कोर्ट ऑफ लॉ में आर्बिट्रेशन तक नहीं होती। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट। आपको पता है लोग ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, कुछ था ही नहीं। एक तो सऊदी ने रिकॉग्नाइज किया एज एन इंडस्ट्री। जब आप इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करते हो तो आप इससे गिग इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसीडर करना शुरू करते हो कि इस इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स कौन है, एवरेज जीडीपी अर्निंग, एज ग्रुप, फैसिलिटेशन कैसे कर सकते हैं, टैक्स कैसे लगा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? एंड देन दे स्टार्टेड इनवाइटिंग पीपल इन, यार हमारे पास यूथ बेस है जो खर्च कर रहा है, इनको रिक्रूट करो। एंड नाउ दे आर वेरी सून विद इन दिस ईयर गोइंग टू बी द लार्जेस्ट ई स्पोर्ट्स प्लेयर इन द रीजन। पाकिस्तान को भी इसको एज एन इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करना है, इसकी ट्रेनिंग करवानी है, इसके बूट कैंप्स करने हैं। जिस तरह आप टीएसएल के लिए बड़े ब्रांड्स को बोलते हैं ना कि टीम्स में खर्चा करें, स्पॉन्सर करें, अगेन पीपल डोंट लाइक हियरिंग दिस। इंडिया ने कैसे ग्रो किया? अगेन वही टाटा, वही बिरला, वही अंबानी। उन्होंने हर चीज की लीग, सिर्फ क्रिकेट की नहीं हर चीज की लीग बना दी, कबड्डी कबड्डी लीग तक है, वो पहुंच बैडमिंटन गए लीग है, उन्होंने ई स्पोर्ट्स की लीग और खड़ी, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर्स आके उसमें खेल रहे हैं बैडमिंटन लीग ई में भी। स्पोर्ट्स की उन्होंने लीग खड़ी की। उन्होंने कहा यार इसको हमने तरजीह देनी, बिकॉज हमारी 1.2 बिलियन पीपल, ग्रेट यूथ पॉपुलेशन। उन्होंने कहा यार आप अपने अपने शहरों में ना लीग्स अडॉप्ट कर लें और आप एडवर्टाइजिंग की बजट से फिलहाल फंड कर लें। एंड दैट्स व्हाई इंडिया टुडे 2022 दिसंबर एंडेड इज अ $225 मिलियन ओनली ई स्पोर्ट्स एंड स्ट्रीमिंग इकोनॉमी। 225 मिलियन सिर्फ ई स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमारे एक्सेप्टेंस ही नहीं है। किसी को बोलो अच्छा इसको इस बोलेगा पे डांस तो माय जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज गोइंग टू बी कि ये जो सक्सेसेस आई हैं इसके बाद भी वी डोंट सी के रोस्टर्स नहीं बन रहे, बट नाउ आई अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट यू आर टेलिंग मी कि जब तक ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली नहीं होंगी पीपल आर नॉट गोइंग टू, बिकॉज रोस्टर सेटअप करने का मतलब ये आप एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, आप तनख्वाहें देंगे, एक तनख्वाहें देंगे, तनख्वाहें आप एक कहाँ से तरीके से आएंगी? चलेंगे। ब्रांड से आएंगी। तो जब तक ये सिस्टम नहीं बनेगा तब तक रोस्टर्स तो नहीं बनेंगे, चाहे जितनी भी successful हों चीजें। एक ये, दूसरा अनफॉर्चुनेटली वी एज 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 अ नेशन अराउंड कंटेंट, ऑल कंटेंट अब बात एड्स ले लें, अखबार ले लें, ड्रामे ले लें, वी हैव नॉट मैच्योर्ड। हमें पता ही नहीं है कि ऐड कहाँ कहाँ लगाने हैं, पता ही नहीं है डेमोग्राफिक को रीच आउट कैसे करना है, हमें कुछ नहीं कि आपसे भी
हमें खुश। तो हम जो 15 साल से वही काम कर रहे हैं, जहां हम ऐड लगाते थे अखबार में, किसी को पता नहीं अखबार में टोटल व्यूअरशिप 1 मिलियन से कम है, रीडरशिप है, लेकिन वो उधर भी आप 70-70 लाख रुपए के पेज ऐड लगा रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस। सेम विद टीवी, देयर इज नो यूथ प्रोग्रामिंग। अब मैं आपसे सिंपल से बात, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ यूथ प्रोग्राम, यूथ कंटेंट ऑन? नेवर, इट्स नॉट बीन ऑन। ठीक है, व्हाट इज द लास्ट वन यू रिमेंबर? कमांडर सेफगार्ड and Dettol Warrior. Again, brand and sponsorless because someone has to fund the outreach. उसके अलावा आपको कुछ नहीं। ठीक है, तो द प्रॉब्लम है आज जब आप एक लीग बनाते हैं, आपको जैसे मैं इस धंधे में हूं ना, मुझे एक एक मैट्रिक पता है और मैं हंसता हूँ कि लोग कैसे इसको। कल मुझे किसी ने लफ्ज यूज किया, इट्स निश। मैंने कहा when our country, do you know how much we spent on gaming last year? We spent $520 million on gaming. Wow. It's not a niche, buddy. It's not a niche. So I told that person, I said, at 540 That's the million, consumer market for games and all games sort of related gaming. spend. Yeah, हाँ. also okay. Can game related spend, right? उसमें gaming merchandise भी आ रहा है। मैं कहा जी 550 मिलियन पे ना नीच नहीं होती। It's as mainstream as it can get, right? The problem है कि जब आप ये टीम बनाते हो और आप कहते हो मैं करती हूँ, मुझे या आपको या अगले बंदे को स्टैट्स पता है, उसको पता है क्या डेप्थ है, क्या पोटेंशियल है। You go to these brands, you go to these companies, they would rather still put an ad between a morning show, or they wouldn't fund your jersey. So there's no funds, right? अब रह जाता है पीछे सिर्फ whatever is left over. Right. And वो प्लेयर्स को उस लेवल के कॉन्ट्रैक्ट और उस लेवल के स्टाइपेंड्स और उस लेवल के लीगल अरेंजमेंट्स नहीं देते कि वो बेचारे कुछ compete कर सकें। A lot of these kids, even while being under contract of league, they travel across countries on their own money. आपने अरसलान की ट्विटर याद होगी पुराने दिनों हाँ. की, पहले सारे काम खुद करता था बेचारा, बिल्कुल सही. लाइन में लग के वीजा लगवाना, पैसे जमा करके जापान चले जाना, नाउ स्टोरी, राइट? और मसला ये है कि अभी भी जो पीछे पीछे आ रहे हैं, they have to go through the same journey, and because of that journey majority will drop out because not everybody can go all और the way यही through. मसला है। So यही मसला है। I was speaking to a brand that day, and they said we want to invest in game. Nothing to do with Raptr Games, with the advice there. वो it was a financial brand, financial sector का brand था। So they called and they said, you know, we want to open up a youth demographic, and can we can you tell us how to reach out to the youth population? So मैंने तो दो चार मोटी मोटी चीजें बोली कि जी पाकिस्तान को छोड़ते हैं, दुनिया में ऐसा होता है। एंड देन दे सेड कि यार एक बात बताएं, अगर हम टूर्नामेंट करा लें, तो मैंने कहा करा ऐसी बात है, टूर्नामेंट करा लें जी, आप उसे हासिल क्या करें? उस यार हमारे फिनटेक के हमारे ब्रांड की तरफ लोग आए। मैंने कहा भाई एनरोलमेंट में तो 350 लोग या 320 लोग की कैप होती है, एक इवन नंबर होता है, क्योंकि इट हैज टू बी ए ट्री। तो 350 लोग अगर आपने ऑनबोर्ड करने तो करते हैं और ऑनबोर्ड होके करेंगे क्या? करेंगे कि हाँ, वैसे किसी मॉल में That's the story of every आप fintech मॉल में and एक्टिवेशन कर ले, 30,000 बंदे आप एक हफ्ते में ऑनबोर्ड कर लेंगे, 300 बंदे से आप क्या करेंगे, राइट? तो नहीं, लेकिन होगा हमारा ब्रांड होगा। तो मैंने ब्रांडिंग एक्टिविटी का है, फिर आप ये नहीं कहें कि मुझे डेमोग्राफिक को रीच करना है, क्योंकि अगर आपने इस डेमोग्राफिक को रीच करना है ना, तो फिर आप लगाए करोड़ों रुपए, आप एक लीग को स्पॉन्सर करें, उसके 12 प्लेयर को स्पॉन्सर करें जो 3 पबजी खेल रहे हो, 3 वैलोरेंट खेल रहे हो, 3 फलाना खेल रहे हो, खाने आप सबको. उनको उठाएं, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट लाख लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट रखें, मुल्क में कंपटीशन भेजे, आस पास के मुल्कों में भेजे, ताकि आपका एक ब्रांड का एक डायरेक्ट कनेक्शन बने आपकी यूथ डेमोग्राफिक। Have a domination plan. Exactly right. And it's not like they don't have the money. The brand I was speaking to spends more than 7.5 crore rupees just on digital advertising, which means boosting on Instagram, Facebook, and Like right? And जो they फेसबुक ने कह दिया था 6 साल पहले प्लीज लाइक्स के लिए एडवर्टाइजिंग, exactly right. तो स्टिल दूं. They're still doing that. So the problem is जो पैसा देने वाला, and that is complete opposite of how India. अच्छा ये लेट्स टेक अ पॉज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बिकॉज अब दुनिया में भी देखते हैं जहाँ ये सिस्टम्स बिल्ड हैं, क्योंकि मैं ई स्पोर्ट्स सर्कल्स को बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ, कुछ मेजर लीग को तो, काउंटर स्ट्राइक को, टेकन को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, बट आई हैव रियलाइज्ड कि वो प्लेयर भी व्हेन दे मेक देयर मनी इन एवरीथिंग, व्हेन दे हैव डन एवरीथिंग वर्ल्ड नाउडेज एक्चुअली अर्लियर देन दैट दे रिटायर एंड दे गो टुवर्ड्स प्रीमियम। बिकॉज आप स्ट्राउड को देखते हैं तो अगर स्ट्राउड प्राइज मनी में और स्पॉन्सर्स में लेते हैं, अगर जितने पैसे कमा लेता है स्ट्राउड उससे 4 टाइम्स ज़्यादा जो स्ट्रीमिंग में कमा लेता है घर बैठे बैठे, ठीक है ना? तो इवन दो आई थिंक इज बैक टू प्लेइंग, और आई थिंक मे बी शायद आजकल वैलोरेंट वो खेल रहा है,
वापस तो सर्किट में, बट स्ट्रीमिंग जो है वो दैट्स इज कोर बिजनेस। तो अब अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ से कि ये सारे गैप्स मौजूद है हमारे पास, प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है सर्किट में, हाउ कैन स्ट्रीमिंग चेंज दिस लैंडस्केप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विजिबिलिटी। अब मैं आपको बताता हूँ, somebody asked me, I mean by now I think even people who listening have established that I'm setting up. I think it's pretty clear by now that's what we're doing at Raptr Games. A lot of people ask me YouTube के होते हुए आप क्यों बनाएंगे? मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, जो अपने घर में आपका बेटा YouTube खोलता है तो उसके होम स्क्रीन पे अल्लाह का शुक्र है एल्गोरिथम जिंदा है, तो उसको चले 2-3 लेयर तो अपने मर्जी के नजर आते हैं, लेकिन पहले 1-2 लेयर में हम टीवी और एयरवे के ड्रामे ही नजर आते हैं, क्योंकि उस पर होते 400 मिलियन व्यू, 300 ऐसे ही है। व्यू। मैंने कहा योर लोकल टैलेंट गेट लॉस्ट इन द क्लास, नजर ही के तो ये, क्योंकि लोग समझते नहीं है कि स्ट्रीमिंग के नंबर्स कभी भी मैस कंटेंट के नंबर नहीं होते। अगर मैं और आप अभी बात करते हुए ट्विच पे जाए अपने मोबाइल पे, तो टॉप स्ट्रीमर के इस वक्त कंटेंट व्यूज आ रहे होंगे 4000। हाँ, मतलब आप बारिंग अ फ्यू, अगर आप डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट को निकाल दें, आप टिम द टैटमैन को निकाल दें, जो कि 40-50 की रेंज में बैठे होते हैं, जनरली 5000 एंड 10,000। येट दोज आर द पीपल जो महीने के लाखों डॉलर, राइट, बिकॉज देयर इज नो वेस्टेज, देयर इज नो क्लटर, राइट। द प्रॉब्लम इज कि विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोग कहाँ जाके, आप अपने शहर में स्टेडियम क्यों बनाते हैं, या आप अपने शहर में डोमेस्टिक क्रिकेट लीग क्यों स्टार्ट, सिर्फ नेशनल साइड को देखा करें, नहीं ना। आप पूरा साल कराची डॉल्फिन, लाहौर लायंस, ये वो करवाते हैं ना डोमेस्टिक, बिकॉज विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्ट्रीमिंग से विजिबिलिटी आती है, यू गेट टू नो अरे इतनी बड़ी, एंड देन यू वॉच एंड आपका पैशन डेवलप, एंड देन इफ यूर अ गेमर यू स्टार्ट स्ट्रीमिंग एज वेल, यार आई एम आल्सो गुड। यही होता है ना, हम स्पोर्ट्स भी देखते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना चाहिए। तो दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जो मैंने बहुत तेरे बात, when that behavior starts turning into economic behavior, and that economic behavior can only be facilitated by a streaming platform, वरना जो मर्दान में बंदा बैठा हुआ है उसे क्या पता कि सियालकोट में जो स्ट्रीमर है वो कौन है, unless there's some place they can interact, they can talk and they can monetize each other's time, right? There's a two-way reward पैसे, देखिए स्ट्रीमिंग में लोग कहते हैं अरे वो पैसे क्यों देते हैं। मैं बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ, मैं कहा चले एक मिसाल ले लेते हैं, बल्कि शायद आपके दफ्तर में ही बात हुई थी, मैंने जब कहा था जनाब को, मैं कहा था आपको फुटबॉल का शौक कहता जी, मेरा फेवरेट प्लेयर कौन सा है, मेसी। देखा अगर आज मेसी ट्विच पे आ जाए, लाइव ड्रिबलिंग वगैरह करके दिखाए और बोलो यार मैं अर्जेंटीना में गांव के लिए पैसे रेस कर रहा हूँ, जो दिल में आए मुझे इस पे टिप दे देगा, मैंने कहा आप देंगे नहीं देंगे। अगले बंदे ने कहा मैं $100 दे दूंगा, मैं क्योंकि आपके लिए मेसी इंपॉर्टेंट, मेरे बच्चों के लिए वो प्लेयर इंपॉर्टेंट, राइट। वैसे देयर इज अ रिवॉर्ड, आप टिप देते हो, वो आपको एक्नॉलेज करता है, कभी कभार वो कहते हैं कुछ काम, कुछ स्पेशल हेडशॉट करवाना है, कुछ करवाना है, मुझे बताओ मैं करता हूँ, ऐसे देयर इज अ रिलेशनशिप। तो विजिबिलिटी इज द फर्स्ट पार्ट, एंड देन टर्निंग दैट विजिबिलिटी इनकम इज द, जब आपने इनकम क्रैक कर लिया ना यार किसी सेगमेंट में भी, उसके बाद इट्स रनअवे फेज, फिर तो आपने कुछ इस नहीं पे करना। इनकम पे पॉज लेते हैं, बिकॉज आई वांट एज वेल, जो आज का टॉपिक भी था, बॉलर रह गया, 4 थे रन, एंड यू टॉक्ड अबाउट एसोसिएशन, तो वो प्लेयर्स एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन और चीज़ों से भी हो सकती है। इन माई करियर इन मीडिया, मैंने बहुत ज़्यादा जब स्पोर्ट्स चैनल्स के साथ काम कर रहा था मैं, तो मैं आई वाज ट्राइंग टू टेल देम, दिस वाज वे बैक, दिस वाज 10-15 ईयर्स बैक, आई वाज ट्राइंग टू टेल देम कि आपको इंटरनेशनल कंटेंट नहीं मिलता, फाइन, आपको के राइट्स नहीं मिले, लोकल स्पोर्ट्स की स्ट्रीमिंग में इन्वेस्ट करें, बिकॉज स्टेडियम और उस जगह जाना तो एक बात है, बट डिजिटल प्रेजेंस बहुत पावरफुल हो गई। एंड दिस स्टोरी कम्स फ्रॉम कि आई वाज वंस जस्ट ब्राउजिंग थ्रू फेसबुक, और तकरीबन 10,000 लोग एक किसी पिंड में, बहुत छोटे से पिंड में एक मैच हो रहा था, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग को 10,000 लोग देखते। एंड जो आपने एसोसिएशन की बात की, एसोसिएशन वाज ऑब्वियसली वन इज क्रिकेट, बट देन आल्सो देयर देयर ओन विलेज, जिससे वो एसोसिएशन दुनिया में वो कहीं भी बैठे हैं, वो देख रहे हैं, बिकॉज उनके गांव में वो क्रिकेट मैच, एंड बेसिकली वो एसोसिएशन बहुत सारी डिग्रीज पे होती है। सिमिलरली यू टॉक्ड अबाउट लोकल स्ट्रीमर्स, एंड दिस इज समथिंग आई वांट टू नाउ कम एट इट, तो हम एक दिन बात भी कर रहे थे कि फेसबुक गेमिंग पे एक लाला जी हैं पिंडी से, मुझे इनका नाम याद नहीं है, वो बस सिमुलेटर चलाते हैं, और वो बस सिमुलेटर चलाते हैं, यस, प्रॉपर रिग एंड प्रॉपर सेटअप एंड एवरीथिंग, एंड लोग नीचे आ रहे होते हैं, और लाला जी की हाल ने, और वो आगे से कहते हैं वाला जी वाला की हाल है तोड़ा, की हाल है तोड़ा, लाला जी की हाल है, दैट्स व्हाट गोइंग ऑन, बट पीपल आर रियली ट्यून्ड इन, वो 5,000 से ज़्यादा कंकरेंट व्यूअर्स लाला जी के होते हैं जो बस सिमुलेटर चला रहे हैं। बट कमिंग टू दिस पॉइंट नाउ, तो ये एस्टेब्लिश हो गया, बट अब यू आर रनिंग, यू क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म रैप्टर के नाम, अब ट्विच एग्जिस्ट करता है, लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस कि यार ट्विच है जब,
और ट्विच इतना बाकमाल काम कर रहा है, तो फिर रैप्टर की ज़रूरत क्या है, या किसी भी लोकल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्या है? देखिए, किसी भी लोकल प्लेटफॉर्म की जरूरत क्या है, वो तो अब इतने सारे यूज केसेस इतनी इंडस्ट्रीज में आ गई हैं कि ये तो आई थिंक ये सवाल अब मर जाना चाहिए। लोग फिर भी पूछते हैं, मेरे ख्याल है लोग अपना चेक मार्क पूरा करते हैं। एवरीथिंग फ्रॉम ई कॉमर्स टू लोकल प्लेट टू एवरी अदर थिंग, ये प्रूव हो गया है कि डीप लेवल ऑफ लोकलाइजेशन टू कैप्चर लोकल कॉन्टेक्स्ट मीन्स अच्छी एंड बुरी चीजें दोनों, क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीजों के लिए केटर करना है किसी ऐप में, किसी सर्विस में। तो लोकलाइजेशन इज ऑलवेज रीप ग्रेटर रिवॉर्ड। तो अगर ट्विच है तो है, अच्छी बात है। लेकिन मैं इससे अगेन, मेरे पास हर चीज की मिसाल है हमारे रीजन से। मैं अगर इंडिया की मिसाल, 2021 से पहले इंडिया में ट्विच ही देखा जाता था, बाकी और प्लेटफॉर्म भी थे, लेकिन उधर भी यही मसला था, दे कुड नॉट मोनेटाइज बिकॉज ट्विच डिड नॉट हैव अ लोकल प्रेजेंस एंड दे डिडंट वांट टू डू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ऑब्वियसली। तो मेरी तरह ही दो तीन अपस्टार्ट थे, उन्होंने कहा कि यार लाखों लोग हैं इंडिया में, अगर करोड़ों नहीं, जो स्ट्रीमिंग करते, जो स्ट्रीम देखते हैं, जो इसी तरह लाला जी को देखते हैं, उसको देखते हैं, and they're unable to do anything. And they're unable to get a voice on Twitch, but Twitch is a global audience, and a voice on YouTube. This is India, right? And India has mastered digital presence like to a science. And they said, जो हमारा प्लेटफॉर्म होगा loco.gg उसका नाम है, यार we will only focus on getting Indian content in. So we will go north to South India, Tamil, Telugu, Malayalam, Marathi, Gujarati, Hindi, Urdu channels होंगे. People can be from their relative provinces, their relative dialects, their belongings, and they can stream games, they can stream whatever they want. तो जिसने अपने मुल्क के लोगों को देखना होगा वो आएगा, वो लोकल कंटेंट क्यूरेटेड होगा, वो देखेगा। और अगेन इकोनॉमिक लेयर, कि फिर जब वो उसको अप्रिशिएट करना चाहेगा तो हमने पूरी इकोनॉमिक रेल बनाई हुई होगी जिससे वो पैसा कमा सकते हैं। इस पे बिकॉज आई नाउ, मैं फॉर इंस्टेंस अरसलान को फॉलो करता हूँ ट्विच पे, और वो ट्विच पे स्ट्रीम कर रहा होता है, और अब उसने सेटअप अपना काफ़ी अच्छा कर लिया एंड एवरीथिंग। बट मुझे याद है कि कुछ महीने पहले आई वाज ट्राइंग टू गिव हिम अ सब, बट वो सारा सिस्टम ब्रोकन था, आई कुडंट डू इट। तो अब लेट्स से क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी पाकिस्तानी स्ट्रीमर्स के पास टू मोनेटाइज दिस? तो अरसलान ऐश है, तो इफ ही इज ऑन ट्विच देन ही प्रोबब्ली हैज अ कजिन इन द यूएस जिसने उसके लिए पेपैल का अकाउंट खोला हुआ है और अरसलान उसे कहते हैं हर 3 महीने मुझे पियोनियर से पैसे भेज देना। सही। दैट्स व्हाट एवरीबडी डज हूज ऑन ट्विच इन पाकिस्तान एंड इंडिया, राइट? YouTube only gives you money on views. There's no direct monetization on and neither और does यूट्यूब इज अ ग्रेट प्लेस अपनी वॉड वीडियो ऑन डिमांड no फेंकने के लिए, VOD. बट So I mean, so for example, even for our platform, VOD after a certain age we'll throw on our YouTube channel. Why will I maintain VOD? But the people come to Twitch to watch someone play live, not to see how someone played like 6 months ago, a right? new day every day. It's a It's a new day new every game day, every day. right? And the thrill is the interaction. If you can't interact, there's no thrill in watching someone streaming, right? Um, so just to answer your question directly, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का पाकिस्तान में चाहिए। सब्स की आपने बात की, सब्सक्रिप्शंस हैं, टिप्स हैं, गिफ्ट्स हैं, अप्रिसिएशंस हैं, डोनेशंस हैं, पाकिस्तान में कोई तरीका है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट, दैट वी क्रिएटेड, राइट? वेयर इज अ प्लेस वेयर समवन लाइक अरसलान तो बहुत बड़ी हस्ती है सर, लेट्स टॉक अबाउट एन अप एंड कमर, राइट, हु हैज अ कपल 100,000 पीपल फॉलोइंग। वो आज जाए तो हमारा अगेन हमारा एम्बिशन एग्जैक्टली लोको वाला है, जो इंडिया वाला है, कि यार जब लाला जी को उसके पिंड के लोग पैसा देना चाहें, एक चुटकी में हो जाए, दे भी सके लाला जी को मिल, ठीक है? फिर लाला जी के इंशाल्लाह जब लाखों फॉलोअर हो जाए और लाला जी बोले यार अब मेरा चैनल कोई ना व्यू कर सके जब तक वो मेरा सब्सक्राइबर ना हो। Right. आज आप ट्विच पे करके देखें, नहीं हो सकता, आप कर नहीं सकते पे किसी को। लाला जी कर दे सब्सक्राइबर, तो लाला जी को लोग महीने के 200-300 रुपए दे सके उनके चैनल के एक्सेस के लिए। That is what means, that is how someone who's good at content creation monetizes their hard work. यार मुझे अगर लोग देख रहे हैं तो मुझे अप्रिशिएट कर, अगर मैंने कोई अच्छी चीज की तो मुझे अप्रिशिएट कर सकें, अगर मैं किसी कॉज के लिए पैसे रेस कर रहा हूँ तो लोग मुझे डोनेट कर सकें, अगर लोग मुझे डेली, अब लेट्स सपोज हम इस शो को खिचड़ी, व्हाट इफ दिस हैज इंशाल्लाह कपल ऑफ 100,000 रेगुलर व्यूअर्स और हम हर हफ्ते इसका एक एपिसोड निकालें, and you can only watch Kichdi if you subscribe on the Kichdi channel on Raptr for 200 rupees a month. You'll have a lot of people, a couple of thousand people will be अभी तो दो दो हमारे listeners टोटल, and they have sent us some questions as well, and we'll ask you those questions. ठीक है? तो this क्या is my point. monetization तरीके कैसे होगी, क्या how does it technically happen? Raptor. देखिए, very simple. यासर अवान साहब जो हैं वो टीम कर रहे हैं, let's suppose whatever you like,
and I'm one of the viewers. ठीक है जी, अब आपने कोई जबरदस्त फुटबॉल खेल रहे हैं, आपने जबरदस्त कोई हाफ खेला है, वन यू और आपने बोला जो टिपिकली होता है, आपने बोला यार अगर तुम लोग को अच्छा लग रहा है मैं क्या खेल रहा हूँ, यार मुझे टिप दो, सब्सक्राइब करो, हाँ, टिप करो यार, टिप दो या मैं सब्सक्राइब छोड़ो, सबसे बेसिक यूज कर देने, टिप कर दो यार, तुम लोग के टिप्स आते हैं तो मेरे अपना गियर भी बेहतर करता हूँ और एक भी बेहतर करता हूँ, तुम लोग को शाउट आउट भी दूंगा जो मुझे होगा। मैंने वहां पर टिप पे क्लिक किया, मेरे पास पाकिस्तान में जितने ऑप्शन है ना पैसे देने का किसी को, जरा आप ले ले, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं देना चाह रहा, मगर जिसका भी आप, वो सारे हमारे पोर्टल पे वहाँ रन टाइम पे आ रहे हैं। आपने क्लिक किया, आपने टिप दे दी, उससे उसको टिप मिला, कन्फेटी गिरी, शशके हुए, उसको मैसेज आया, उसने कहा ओ भाई इमरान साहब आपने मुझे 100 रुपए दिए हैं, जबरदस्त सर, छा गए आप, छा गए, मुझे वैलिडेशन मिल इमरान गई। साहब तो चाय भी नहीं पिलाते किसी को, इमरान खान का आप कह रहे हैं 100 रुपये दे दे। so so it's literally that simple, and then what happens is लाला जी या यासर अवान साहब जब रात को सोने जाएंगे स्ट्रीम खत्म करने के बाद, वो अपना डैशबोर्ड खोलेंगे, उनको एक एक डिटेल आ रही होगी, कितने लोगों ने मेरी स्ट्रीम देखी, कितने लोगों ने मैंने पैसे दिए, कितने लोगों ने मेरे बारे में कमेंट लिखे, मुझे मैसेज किए, and that helps them create more content for the next time they stream, everything they do is absolutely simple. And what we've done different is पाकिस्तान ने एक और चैलेंज दिया है, लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होते, लोगों के पास डिजिटल बैंक अकाउंट भी नहीं होते, तो हमें डर ये था कि यार कोई स्ट्रीमर है, अब अगर स्ट्रीमर को मैंने 1000 रुपए देने, तो स्ट्रीमर के पास तो वॉलेट ही नहीं, मैं 1000 रुपए कैसे दूं? तो हमने ये भी बड़ी बल्ली अपने सर पे खेली कि वी क्रिएटेड अ पेमेंट प्लेटफॉर्म कॉल्ड द रैप्टर वॉलेट, व्हिच मींस एवरी टाइम एनीवन बिकम्स अ स्ट्रीमर दे गेट अ वॉलेट, डिजिटल वॉलेट। तो जब मैं आपको पैसे दूंगा तो वो पैसे उस वॉलेट में ऑटोमेटिकली गिर रहे हैं, और हर कुछ अरसे बाद आपको डिस्पर्स हो जाएंगे, और आपको एटीएम कार्ड भी मिलेगा, और आपने जहाँ खर्च करना है, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल एक्टिविटी, कि आपने एक एक्टिविटी की, वॉलेट बना, फिर आपने स्ट्रीमिंग की, फिर आपने पैसा That's the कमाया और फिर आपने fintech खर्च with किया। the intimate connection, the true value The for true embedded finance, which is unique to us in our country because हमारे challenges different. do you think market is ready? Because it's, for me, मैं अगर देखता हूँ तो it's not just the Arslan Ashes, but for instance एक बड़ी basic example, the amount of money PUBG and Free Fires of the world have invested in Pakistan, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग compete करते हैं, खेलते हैं, so there are a lot of good people playing, but do you think there is big enough market? कितने streamers हैं पाकिस्तान? देखिए, yes, short answer yes. देखिए, because I always believe, and it's always in my practice, to get into a segment before it takes off, so that you do all the legwork by the time it takes off, right? And I truly believe we are at the cusp of it mushrooming or ballooning or exploding, whatever you call. तो मैंने 2010 में क्लाउड शुरू किया था ना अपने को-फाउंडर के, हमें पहले सामने कोई सेल नहीं, मतलब ना होने के बराबर, ठीक है? And our board member, God bless him, genius person, he said, I didn't expect you to make these stuff because we're not riding the coattails of anything. We're creating that wind. So the market will reach where we are, but we've taken the right call to get ahead. And then the rest is history of what Rapid Compute became, alhamdulillah. That's exactly what we've done now. We can see the indicators. अभी लाहौर में 3 हफ्ते पहले टेकन का टूर्नामेंट था, बाज वालों का टेक डाउन, in which IGN and Raptor were a part I have of. heard कि वो तो official second certified circuit पे भी था, जी, अगर सेकंड वर्ल्ड टूर का हिस्सा था, ठीक है? And उसके ratings count towards the ratings on the pool, on the table, and there were thousands of kids there in live attendance, and more than 12 countries had flown down to participate. जीते पाकिस्तानी, हमारी हुकूमत है जी अब तो टेकन पे। मैं वो कहता हूँ ना, वो आई सी विद अरसलान एंड परहैप्स आतिफ, आई सी दैट राइवलरी इमर्जिंग, जो जानते खान और जहांगीर जहांगीर खान, खान वाली, absolutely, वी प्रॉब्ली absolutely, गोइंग टू डोमिनेट टेकन लाइक once we did in sport. absolutely. So and then I saw people there, and I saw people how they were behaving when they saw, and मैं नाम नहीं लूंगा, there was an actress who was called for media glamour at the event, and हम ऊपर फॉयर पे बैठे हुए थे और हम हंस रहे थे कि वो बेचारी आई, फोटो शूट की, चले गई, 10,000 बच्चे ने किसी एक बच्चे को उसे हटवा, ठीक है? और उसके 6 मिनट बाद डकी भाई अंदर आए, and the All hell broke all loose. hell broke loose, man, and everybody was screaming, and I was screaming, and whatever. That's what it is, right? And we're at the cusp of that happening, okay? And that is happening now. And आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि असलान है, but मैं जो हूँ ना, what I'm seeing happening is happening at the grassroots, right? Because there are certain games, and again I say this respectfully for our people, we're a low literacy country, right? And
Traditionally, if you want to go mass market, games like RPGs and Defense of the Ancients are not going to work. What works in Pakistan are iconography or symbolistic games, which require memorization rather than interaction. PUBG क्यों चलता है? Icon याद. Doesn't matter what those icons are. So we have everybody from the rickshaw driver, bus driver to corporates playing PUBG, Free Fire, FIFA इसलिए चलता है. Tekken literally इसलिए चलता है because it's button mashing with finesse. Now it's turned into an art, right? So you have this great opportunity to go down to the absolute underserved communities and give them an opportunity to A, become celebrities, B, earn an income. Right? Like TikTok, TikTok gave that fame. that underserved. Remember those two kids we saw who did special effects and वो TikTok पर उन्होंने वीडियो डाली थी उन्होंने वो blue light और laser. आपको पता है देहात से थे वो आपने देखा था. They're incredibly famous kids now who have actual freelance work from people who want them to do visual effects. Would we have even known about them before TikTok? Never. They would not even got in an audience with you, yeah. Even though you run a community program. So they wouldn't have known how to get there. सही हो गया. So अब हम मूव करते हैं towards the end of our podcast और हमने सेगमेंट ऐड किए हैं. पहला सेगमेंट है मेरा था और इसमें so we ask you a question. So हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप स्ट्रीमिंग तो करेंगे और लोगों को एम्पावर भी करेंगे, make it their livelihood. But what is that one game that you were good at when you were young and अभी what do you कौन सी game है जिसमें you can compete? Interesting question. Okay. Well, probably might be something people won't be interested in, but I was very good at Grand Turismo. I think I can still hold my own when I do co-op, or I mean PvP on Gran Turismo. Other than that, I was exceptionally good at Mortal Kombat. So maybe if I get the chance, I could do that. Huh? Strangely, I was not the person who ever did fatalities. I was just really good at the combos. So, और जो तीसरा मेरा favorite franchise होती थी, Sega has stopped working on it anymore. That was the Virtua Fighter franchise. I used to be quite good at that. मैंने college level पे compete. So yeah, I think I can still hold my own. Full practice था. Right. अच्छा इस सेगमेंट में जनरली एक सवाल होता है लेकिन आज given your background, my background, we have another question. Both of us are dads, obviously we have kids. Now, gamers like us who are not dads have kids. How do we figure out the time between? Hey. I'll tell you mine after that. Yeah. So, when I was a lot younger, I would laugh at people when they would say कि यार हमें time निकालना पड़ता है और हम certain चीजें sacrifice करते हैं to play games, and I would say like यार नहीं जरूरत नहीं पड़ती. Now that I'm a dad, now that I have a startup, I struggle to game regularly और मुझे बड़ी डिप्रेशन होती है. मतलब मैं जब लाउंज से गुजरते हुए अपने कंसोल को देखता हूँ तो हर हमज़दा इंडियन गाना मेरे दिमाग में आता है कि मैं मतलब लिफ्ट नहीं कर हाँ कि मैं लिफ्ट नहीं करा पा रहा. ठीक है, बट आई अनफॉर्चुनेटली हैव लर्नड हाउ टू गेम आफ्टर मिडनाइट. So when I am because it was a completely conscious call that I made. I was like यार बात सुनो, I like to sleep because I'm tired the whole day and I'm getting older. But do I like it enough to not game? And the resounding answer was no. Okay. So at 12 o'clock, I grab a cup of coffee, I sit in the lounge in front of my big TV, and I game for 2 hours. And I'm okay with waking up the next morning half hungover with sleep. I'm completely okay. But I want to game because that is how I unwind. That is my cigarette. That is my whatever you want to call it. That is my reset. I cannot do without it. So it has to be there. Last night I had a backache. I didn't want to sit in the lounge. I was in bed. मैं 2 बजे रात में बैठ के PS Vita पे Metal Gear Solid 80 के लिए. Your Steam Deck might be feeling very when we're spending time. The Vita is feeling very lonely before that. but yeah. So I have to make time. And for the dads who are listening in, I think first my always when your kids start growing, get them their own console. Get them their own console. First considerable time of the year, you will be able to use those consoles, play games on those consoles, while your kids grow a bit more and they become capable at the point that they snatch away the controller from you.
बट कुछ साल तो वो आपके सांस निकल जाएंगे, देन परहैप्स यू हैव. But 100%, I am surprised I didn't say that. That is what I've always done. I have never shared my console because I want my own time. So when you can afford to do that, do it. अपना कमरा, अपना console, they can play whatever they want. मेक योर, क्या कहते हैं ना, मेक योर ओन टाइम. Yeah, man. अच्छा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज पब्लिक ने पकाई, और हमारे जो दो लिस्टनर्स सवाल भेजते हैं, सवाल कर. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज के जनरली लोग समझते हैं कि जो प्रो गेमर्स हैं वो बड़े अनहेल्दी होते हैं, मतलब दे आर नॉट कॉन्शियस टुवर्ड्स देयर हेल्थ, मतलब मोटे मोटे होते हैं, लगी टीचर खाते हैं, गेमिंग करते हैं, ठीक है. बट रिसेंट पास हम देख रहे हैं कि डू यू सी द ट्रेंड चले हुए अरसलान ऐश पे देखते हैं, लाइक आप गाइस फ्रॉम दीस सिक्स पैक्स एट लीस्ट. मैं आपको I'll jump the answer to that. कौन से प्रो गेमर आपने मोटे अनफिट देखे, जरा मुझे बताते हैं. पता नहीं, ये तो पब्लिक का सवाल गेम. There aren't any. अभी चल के ट्विच खोल लें. There aren't any. And जो प्रो सर्किट पे होते हैं, in fact that day on Twitter, Arsalan and a few people are having a conversation around how to stay hydrated, because these guys travel a lot and these guys play up to 12-13 rounds over several days, and there's talks about having a Snickers bar there or a power bar and a protein shake, and there's water, and there's someone says, I get up 2 hours before and I take a jog so that my adrenaline is rushing and all of that. Everybody's very extremely conscious of how they are because they have to be mentally alert. Nobody can risk being lethargic because they have like low blood sugar or something like that and then not being attentive. So obesity or unhealthiness is generally a very rare phenomenon. उसके एक और reason भी है. Most of the players are Western and they have a much better diet than we do. That's number one. लेकिन जनरली हेल्थ पे बहुत काम होता है, और रिसेंट जो ये वाली जनरेशन है जो गेमिंग में आई है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज स्पोर्ट्स स्टार्स. obviously they can't be athletes because it's not a physical sport, but they're considered sports stars. तो उन्होंने अपना persona भी वही बना लिया. बरसलान ऐश को देखें, बाकी को देखें, buff, built, not taken भी आप देख, because they travel, because they're celebrities, right? But it also comes from that. Now if you're gonna stand on a stage and 10,000 men and women are going to be screaming for you, you're a celebrity. And then you want to look amazing, whether it's Tekken, whether it's FIFA or whatever. So it's all of that as well, right? They're like a TV star. So they look awesome. So everybody's focusing on health now. Them are looking towards, and then we बात है कि think esports, तो शुरू में talked about this sport, the esports, कैसे esports है, कैसे sports है. So I think वो जो maintaining reflexes and mind and body coordination. And यार, और बहुत ही base level पर अगर आप जाते हैं ना, Neanderthal level, at the end of the day, it's visual content. You want to see someone who looks, it's human trait. You want to see something, someone, everything. इसीलिए तो स्ट्रीमर पीछे कैमरा अच्छा बनाता है, इसलिए रेग अच्छी लगाता है, खुद भी अच्छे कपड़े पहनता है और लगता भी अच्छा है, because you want to see the guy for the next 2-3 hours. सही हो गया. So let's move to the last segment, जिसको हम कहते हैं ख्याली. और इसमें I want to ask you is कि let's say you're given a chance to create an e-sport in this field. Oh. So how are you going to structure it? पहली बात है, given and keep in mind जैसे हमारी हॉकी और फुटबॉल प्रैक्टिस होता है, how do you want to structure it, and आपके वो top 3 measures क्या होंगे that you think will have a deeper impact or longer impact on the. Okay, first of all, so and I'll take some notes from my past life in cloud when I had to set up complete movement around cloud regulation and all of that, and that didn't exist back then. Again, the first thing for anything that I would do is after that 3 चीजें. Number 1, in-depth research and understanding of the economic factors behind gaming and the circular economy. कितने लोग खेलते हैं, कितने लोग के पास एक्सेस है, कितना खर्चा होता है, क्या पोटेंशियल है, कितनी लीग है, कितने लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट. सही है, ये मैं अपने फारिग टाइम पे नहीं कर सकता, लेकिन जब ऐसा ओहदा मिलेगा तो मेरे मसाइल होंगे. सबसे पहला काम तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं एक पॉलिसी के नाम लेना चाह रहा. आपको पता है 3 दिन पहले एक पॉलिसी आई है एक सर्टेन एरिया की IT की, जो कि बगैर किसी रिसर्च के बनाई गई है. किसी को उसके लैंडस्केप का पता ही नहीं है, लेकिन उसमें पॉलिसी बनी. ठीक है, so that's number 1. Number 2, I would set up an esports ministry whose entire focus would be first disseminating information and basically visibility to all stakeholders in the ecosystem. अभी सऊदी ने क्या किया है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को ऑन बोर्ड लिया है, उनके HEC के थ्रू उनको समझाया है
and now they have esports and gaming classes and courses within their schools and colleges. ये सारी इसकी डेवलपमेंट बॉस क्रिकेट के बूट कैंप से डिफरेंट नहीं है, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट. दैट्स व्हाट साउदी इज डूइंग, राइट? दे गेटिंग इनटू द करिकुलम कि अगर आपको स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, ये वो, द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज आई वुड क्रिएट एन एंगेजमेंट मॉडल अराउंड इट with youth schools, colleges, universities, whatever. Number three, what I would do is I would create a domestic league system around it. domestic cricket जिस तरह हमारे यहाँ होती है, आपको पता है, भी बड़ी मेहनत से सेटअप हुई थी, करते कोई नहीं था, सिर्फ ट्रेनिंग कैंप्स ही लगते थे, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में से स्टार्ट होना शुरू हुआ. I would create a domestic entire framework around it, जहाँ पर अलग अलग शहरों में ई स्पोर्ट्स सेंटर्स हों, वहाँ पर लोग आए, खेलें, उनकी मैच मेकिंग हो, लीग, उसी में से फिर लीग्स बनती हैं, उसी में से टीम्स बनती हैं. दैट इज हाउ. और तो 3 स्टेप्स तो वैसे ही बहुत कम है. फिर इसके बाद ब्रांड मैच मेकिंग होती है. देन यू फाइंड who would be able to adopt these, give them elevation, create an entire go-to-market strategy around it. Basically do what Saudi is doing. Create a 7-8 step. Perhaps one day you'll be that Mr. for esports, and we have more the pretty Wong's version of video game high school happening. That is one thing I'll be very honest to say. If I was ever offered the opportunity to do that even tomorrow, I would leave everything and do that. With that, we thank you so much, Imran, for joining us for the episode. For our viewers and listeners, please keep listening, please keep watching, and hopefully we'll be back with another great episode next time. Thank you so much. Thank you so much, guys.